Well, it's been an absolutely stunning performance by New Zealand to level the series, and what a performance individually by Mark Chapman. He's had quite the series indeed, and it required such a performance without their main players to be able to draw the series. Jimmy Neesham getting into the mix of things. Handshakes all round. It was drawn in the end, but New Zealand with quite an effort today. And you've got to say that the whole team performed particularly well today, just when it mattered. All cheers all around by all the teammates. Chapman has been the star of the series for New Zealand. Tom Latham, he's going to be a happy captain today, considering everything. We had a hailstorm in the previous T20, but today they were top-notch in all departments of the game. Pakistan would be looking back, perhaps thinking short of runs in the end on this particular wicket. 193 for 5 were made in 20 overs. Rizwan was a top scorer, fell short of his 100. And then in response, New Zealand won by 6 wickets. You've got to say it was quite a performance by Mark Chapman with that 100. Jimmy Neesham as well contributing. And overall, New Zealand will be the happier bunch of the lot. Hello and welcome to Inverex Solar Energy Pitchside Show. What a performance by New Zealand. It was always going to be, the stakes are going to be high in this one, lot to play for, and they came out top just when it mattered. And to talk us through this wonderful performance, I've got a very, very special guest in the house. Jimmy Neesham joins us alongside Arooj Mumtaz. Jimmy, firstly, congratulations, really well done. It was quite a comeback of sorts, I would say, by New Zealand, considering the fact that you're missing your main strength players. You know, it was a different team altogether. How does it feel to be on the winning side at the end? Yeah, it feels great, obviously. You know, you don't want to use those kind of things as an excuse when you come over an international tour. I think every time you play for your country is a great responsibility and a great privilege, and we wanted to compete as best we could, and I think a 2-all draw in the series is probably a fair reflection of how it went overall. How good an innings was that by Mark Chapman? You on the non-strikers end, you know, getting the best seat in the house, having a look at it. I mean, it was magnificent. Yeah, it was fantastic. He's been hitting the ball beautifully all tour, really. He's probably been the standout batsman for us, at least. And yeah, it was an interesting, I suppose, situation where with Eid and stuff, we haven't really been training a whole lot over the last 2 or 3 days. So the guys all came up pretty fresh, and yeah, he was hitting the ball fantastically. And yeah, we were under a fair bit of pressure there, I think, after 8 or 9 overs, needing, you know, 11s or 12s with a few wickets down already. It takes a pretty special innings from that sort of situation to get a win, and he deserves every plaudit he gets from that innings. And New Zealand deserves all the praise as well, Arooj. I mean, it was never easy. I know Jimmy mentioned the fact that it can never be used as an excuse, but it's never easy either when you're coming to a foreign country without your main players. For them to be able to come back and level the series, what do you think it means for the side? I think it's phenomenal, especially to do what New Zealand did today in a high-pressure game away from home. And Tom, just like Jimmy's just mentioned, he also mentioned that it's not an excuse, and they had very little prep time, and it was almost adapting on the go. You felt the batting took slightly longer to adapt. The bowling group came to the party, and then in the final 2, let's not forget, even the game which was struck by hailstorm was shaping up to be an interesting one, because that surface was slightly slow and different. It wasn't a 200 surface, so it could have been a very interesting game had that one also played out. But for New Zealand to come from 2-0 down to put up 2 phenomenal games, and today what Mark Chapman did was just like, it was outstanding. The way he struck the ball so cleanly and at will. 104 in a winning cause, and it's important. Runs always matter when they're in the winning cause, right? I mean, we still have a 98 on the other side, but it's 104 that overshadows everything. And then Jimmy 45 at the back end of it, that contribution, I think 121, there was a partnership to come out from 76 for 4. Fantastic. Well, let's not forget that strike rate. 182 by Mark Chapman. He's been phenomenal this entire series. He's also our hero of the day. Hero of the match, brought to you by Inverex Solar Energy. Perhaps the cleanest striking that we've seen in this entire series. Was able to pick length particularly well, using his feet as well, and really tonking all the bowlers all around the park. You've got to say that it was quite a performance, especially at a time when they needed it the most. They lost a couple of wickets at the top, but then to have that kind of performance and deliver under pressure, wow. Hero of the match,
Brought to you by Inverix Solar Energy. Jimmy, you've obviously watched his career closely and seen him evolve as a player and grow as a player. I mean, what makes him special as per you? Well, I think he's probably one of those players who's had a bit of extra time playing domestic cricket in New Zealand, and I think he's had that taste of international cricket playing with Hong Kong as well in a prior career before becoming selected for New Zealand. So he knows what international cricket is about, and he's just a really clean striker of a ball. And it's tough being on that, I suppose, that fringe of selection where you get the odd game here and there, and then you have to sit out when the main players come back. So it's been incredibly difficult for him to, I suppose, get a consistent run of matches in the team. So that makes an innings like that today even more impressive. And I think, unfortunately, he's off to the airport tonight to fly home before the ODI series. So I'm sure. Any niggles around the team at all? Yeah, well, we'll see. Gary Stead might go into the change room with a crowbar and see if he can find someone. But I think it's a great, I suppose, starting point for his career in international cricket, and he certainly has the ability to make it a long career coming off the back of ball striking like that. Just on your partnership then, when you were out there, New Zealand had lost a couple of wickets. What was the talk in the middle of the pitch? I mean, how do you go about chasing a big total in these conditions? Well, I think we've probably been guilty of allowing ourselves to fall too far behind the rate in a few games, and I think you're going to have games every now and then where you can take bowlers down at the death and really score at that 12, 13, 15 and over rate, but those are rare. And I think we wanted to keep up with the rate as best we could once we got that partnership going, and we were sort of discussing whether we wanted to peg it back a little bit and take it deeper, but no, we both felt that we were hitting the ball quite well, and it was the better option, I suppose, to try and continue being aggressive and try and keep that run rate down around that 8s and 9s, so that if one of us did get out, then a new batsman had enough of an opportunity to get their eye in before they had to start being aggressive. Now, you've played the PSL as well. I mean, does it help to have, been familiar with the conditions and knowing what this ground plays like? You've been part of the side. You also know the players really well. It helps to play in a league when you get familiar with the strengths and weaknesses of all the players. Yeah, absolutely. I think I'm probably easily going to spend more nights in Pakistan than I will in my own bed this year. So certainly getting familiar with the grounds over here. And I think, we're going way back to the scouting meetings and stuff at the start of the tour. There was, I suppose, a lot of questions that I had to answer about different guys that we hadn't seen before. And it does just make you feel good being able to contribute to the group like that and sort of pass on that information. And I suppose that's the silver lining of being able to go around the world and compete in these kind of competitions, is that you can get that knowledge base and bring that back to the Black Caps when you have the opportunity. What about off the field? I mean, I know there's a bit of an Eid break in between, a lot of players going home. What have you guys been up to? Have you enjoyed yourselves? Yeah, for sure. I think there's a little bit of uncertainty from guys that haven't been to Pakistan before. You don't sort of know what you can do and whether you can go play golf and that kind of thing. So having spent the PSL here and knowing how hospitable the country is, and I've been trying to push guys to get out and get down to an embassy and get out and play golf and that kind of thing, and the guys have really opened up a lot about it, and I'm sure the guys have enjoyed this tour as much as any other tour they will internationally. So hopefully we can keep that enjoyment in the group going for the ODIs as well, and hopefully have some more success. Well, we've got a new learner, Arooj, who's learning some golf as well. Any tips for her at all? No, give it up. It's frustrating. It's the worst sport in the world. So yeah, do something else. Give it up. It's frustrating. It's the worst sport in the world. Very optimistic views coming from Jimmy Neesham there. But I'm not going to keep you here, Jimmy, because I know that you need to go and celebrate today's win. Thank you so much for your thoughts, and all the best for the next tour that's coming up ahead. Cool. Thank you. Right, you heard the thoughts of Jimmy Neesham. A fantastic performance overall by New Zealand. I'm sure they're going to be a happy bunch, and they will celebrate, and why not? A closer look at Pakistan after the short break. We'll be joined by Bazid Khan. Back on the Inverix Solar Energy pitch side show, and what a performance by New Zealand. 2-all series का end में result था. Pakistan, what could they have done differently? कौन सी चीजें थी जो जिस पे मजीद improvement की ज़रूरत है? क्या errors थे? Let's find out from Bazid Khan, who joins us today and on pitch side. Baz, क्या कहेंगे? एक सवाल यही है कि runs कम थे या bowling जो है बेहतर हो सकती थी? वहाँ पे कोई मजीद
कोई डिफरेंट ट्रिक्स आजमाए जा सकते थे? देखें, रावलपिंडी की जब हमने पिछले मैच में भी बात, इस मैच में भी बात की, इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। पीएसएल में जितने मैचेस हुए उसमें 209 वाज द एवरेज स्कोर, और चेस डाउन 240 भी हो रहा था। तो ऐसे नहीं था कि चेस डाउन नहीं हो रहा था। जब कैप्टन आके ये कहता है कि 10-15 रन शॉर्ट थे, आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट थिंग इन एनी T20 गेम। जब कैप्टन आके ये कहे कि जी हम 10-15 रन शॉर्ट थे। शॉर्ट क्यों थे? विकेट्स इन हैंड थी। शॉर्ट क्यों थे? ये दोबारा मतलब लॉट्स ऑफ कैप्टन, नॉट जस्ट वन कैप्टन, लेकिन बहुत सारे कैप्टन पोस्ट मैच में यही कहते हैं कि 10-15 रन शॉर्ट थे। वो 10-15 रन शॉर्ट तो आप बाद में कह रहे हो, जब खेल रहे थे तो तब आपका ख्याल नहीं था कि शायद हमें और ज़्यादा रन। द थिंग दैट Pakistan need to look at is the last 3 overs. Pakistan just got 28. They slowed down. The last over was very comical. I don't remember seeing such a comical over for quite a long time. तो अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो मुझे याद पड़ता है कि शायद Morgan, considered as one of the best T20I captains, I think it was David Malan who got to his century via single या कुछ, तो मॉर्गन उससे बड़ा नाराज हुए थे कि आखिरी ओवर चल रहा है और आपने सिंगल लिया है, the intent is lacking. So you have to look at these things. Fortunately for Pakistan is not playing another T20 game till what, February. So ये सारी बातें भूल जाएंगे। नहीं, भूलनी नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए। रूज, आप भी इनकी बात से इत्तेफाक करती हैं कि ऐसा ही था, आखिर में थोड़ी सी स्लो डाउन हुई थी, होना नहीं चाहिए था। और जो इन्होंने एक बात की कि विकेट्स इन हैंड थी, देखिए इवन एट 52 for 3 विकेट्स इन हैंड थी। आप फहीम अशरफ तक बैटिंग कर रहे हैं, अब तो शाहीन शाह अफरीदी भी थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, तो उस वक्त भी स्लो होना, आई थिंक इट्स नॉट ओके। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? जब हम बात करें कि पिंडी की सरफेस है, अच्छी बॉल स्ट्राइकिंग है, देखिए एक तरफ एक 98 है नॉट आउट, एक तरफ है 104 नॉट आउट। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द 98 नॉट आउट, राइट? द रन्स इन द विनिंग कॉज मैटर। और 10-15 रन अगर शॉर्ट थे तो उसके पीछे क्यों थे? क्योंकि हाइंडसाइड में हम भी बात करते हैं, बट ड्यूरिंग द गेम जब आप अपनी अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमाइज नहीं करते, 7 विकेटें 52 for 3 अगेन, जिस वक्त इफ्तिखार और रिजवान खेल रहे थे, 7 विकेट्स इन हैंड्स हमारे पास नहीं। आखिर में भी हम कितने 4 ही आउट हुए या 5 ही आउट हुए, तो उसके बावजूद भी इमाद एंड रिजवान स्टे टिल द एंड। I just feel that when there are the opportunities and we miss them, power play आज का थोड़ा सा बेहतर गया, हमारा 51 for 2 थे, बट उनको देखें 33 for 3, फिर 121 रन की पार्टनरशिप। एंड सो आई जस्ट फील दैट देयर आर सम cogs in the wheel that we need to screw on tighter, and we really need to, बाजिद की बात ठीक है कि 8 महीने 10 महीने तक कोई T20 क्रिकेट नहीं है, बट ये चीज़ें हमारी ODI क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट अ रब ऑफ ऑन दैट, तो इसको हमें वहाँ पर भी देखना पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होता कि पाकिस्तान की टीम जो है एक टोटल डिफेंड ना कर सके, बट आज न्यूजीलैंड ने एक सक्सेसफुल रन चेज करके दिखाया। एंड वेयर डज इट फीचर इन द ऑल टाइम रिकॉर्ड्स? लेट्स फाइंड आउट इन द स्टैट अटैक। Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. Well, this is the second highest successful chase versus Pakistan in T20 internationals. England ने किया था, which was the highest one, and आज New Zealand ने किया है in Pindi this year. जिस तरह से हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, 2-1 पाकिस्तान जो था लीड कर रहा था, फिर एक हेल स्टॉर्म आया, मैच नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, you can pretty much tell, it pretty much tells you a story, because we're talking about this, you know, successful run chase. Also, you've got to look at the bowling as well. I know कि आपने बात की बैटिंग के बारे में, या आप, or do you think कि bowlers are not to be blamed at all today? नहीं, obviously when you're under that pressure, you look at the bowling attack and you think you've got the best bowling attack in the world. I think Pakistan succumbed under the pressure. Ihsanullah, obviously very young in his career, but this was a sort of, मतलब wake up call तो नहीं कहूँगा, लेकिन pressure really hit him. ऐसे वो full tosses आमतौर पे नहीं करते, और मतलब हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, they did not have answers. Yes, I think Chapman ऐसी इनिंग शायद ही दोबारा, या
खेले तो एक और मतलब इट वाज बैटिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अब चांस आपको मिला था, शादाब ने कैच छोड़ा, दैट वुड हैव बीन क्रूशियल। अब मैं बीच में यही सोच रहा था कि अगर न्यूजीलैंड ने ये मैच जीतना है तो ये दोनों ही मैच जिता सकते हैं। इसके अलावा नीचे इतनी बैटिंग नहीं थी, वो एक विकेट आपको मिली नहीं। यस आप फिर अपनी बॉलिंग को देखेंगे, बट अगर आप ओवरऑल रावलपिंडी का देखें तो इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, तो यू हैव टू कीप दैट कंसिडरेशन। एवरेज स्कोर जहाँ पे 209 का है तो 193 डिफेंडिंग ज़रा मुश्किल है, इवन इफ यू हैव द बेस्ट क्वालिटी बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, एंड देन उसके ऊपर एक चैपमैन और नीशम ऐसे इनिंग खेल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम द बॉलिंग। यस यू कैन से कि इन पैचेस नहीं डिलीवर हुआ, लेकिन पिंडी स्टेडियम इज द ग्राउंड यू वांट टू बैट ऑन। And more often than not, you know, Pakistan relies on their bowlers that have delivered in जितनी भी जीते हैं पाकिस्तान मैचेस हमेशा bowlers ही जिताते हैं। But इस दफा जो है obviously you've got to give credit to New Zealand, जिस तरह से उन्होंने ये run chase जो है approach की, that was our stat attack for you. Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. थर्ड डे ऑफ ईद था, लेकिन फैंस जो थे उन्होंने सोचा कि हम अपनी ईद जो है आके ग्राउंड में मनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए पाकिस्तान डिड नॉट विन, बट दे ऑफ कोर्स डिड हैव अ गुड टाइम। आई एम श्योर उनकी अपनी भी राय होगी, उनका अपना एनालिसिस भी होगा। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम महक व्हाट द फैंस हैव टू से। An absolutely brilliant finish and comeback in this series by New Zealand tonight as they go on to win this decider game and draw the series against Pakistan. Now let's go ask the fans what they thought about tonight's performances from both the teams. आप पाकिस्तान को फुल फ्लेज आज सपोर्ट करने आए थे स्टेडियम में, तो आप बताएं कि पॉजिटिवली देखें तो जो मोहम्मद रिजवान थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 98 की बहुत ब्रिलियंट नॉक खेली, 2 रन शॉर्ट हो गए अपनी सेकंड T20I सेंचुरी बनाने में। तो आप क्या ओवरऑल उनकी बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहें? उन्होंने अच्छा खेला है, तो शुरू में विकेट्स भी गिर गई थी, पर यह है कि उन्होंने टीम को साथ लेके चला है, तो मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के, अच्छा उन्होंने खेला। आपने बात की कि उन्होंने टीम को वो आगे लेके गए, तो उनकी और जो इमाद वसीम की पार्टनरशिप थी उसने बेसिकली पाकिस्तान को काफ़ी अच्छी रिकवरी दी, तो उसके बारे में, इमाद वसीम के बारे में आप क्या कहना चाहें? मेरे ख्याल से इमाद वसीम की जो इनिंग्स थी उसकी वजह से स्कोर इतना ऊपर गया, जिससे उन्होंने आके छक्के मारे और चौके मारे, तो मज़ा आया देख के। न्यूजीलैंड ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, पूरी सीरीज में भी बहुत अच्छा कमबैक किया यहाँ तक आने के लिए। तो आप बताएं कि आपको उनकी आज की परफॉर्मेंस कैसी लगी, उनकी बैटिंग जो चैपमैन ने कराई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, आज हम मैच देखते हैं, बहुत हमें मज़ा है, हमने इंजॉय भी बहुत किया है। न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत अच्छा खेला है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है, और ये सीरीज ना बहुत मज़े की गुजरी हम सारों की। जो चैपमैन है न्यूजीलैंड की टीम से, लीडिंग स्कोरर है न्यूजीलैंड की टीम के, उन्होंने जिस तरह न्यूजीलैंड के लिए परफॉर्म किया, सेंचुरी बनाई है, उनको मैच जितवाया है, उनकी इनिंग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत अच्छा उन्होंने खेला है, और आई थिंक इनका ऐसी बैटिंग भी बनता भी था उनका 100। हमारा भी अच्छा स्कोर है, बाबर है और रिजवान खेलते हैं, मगर नीचे जाती है आउट होते हैं, विकेट हमारी विकेट गिर जाती है, हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। Well, a bit disappointing for the Pakistani fans tonight. However, they came out with good sportsman spirit as they were full of praise for the New Zealand team nonetheless. And this T20 series comes to an end and ends in a draw. However, I really hope that all of you watching enjoyed this series. Until next time, it's goodbye from me. See you soon. Well, this tour does not end here, though. Pakistan does have a chance to win the ODI series. The ODI series starts in a couple of days. A different team, you would say. Schedule, this is pretty much in front of you. 2 one-days pehle, the one-days will be played in Pindi. And then we move over to Karachi for the 3rd, 4th and the 5th one-day international. All right, ODI series अब आ रही है, बैज एंड अरूज। अब थोड़ी सी टीम डिफरेंट है, कुछ इफ्तिखार इज नॉट इन द टीम, कुछ और चेंजेस भी हैं। कैसे देखते हैं इस ODI सीरीज को? वी हैव अ वर्ल्ड कप कमिंग अप लेटर ऑन इन द ईयर। अब सारे जितने ODIs हर टीम जो खेलेगी, दैट इज इन प्रिपरेशन for that World Cup. I think Pakistan, especially in Pakistan, is a very good ODI side. You would clearly mark them as favorites. I don't think
ODI में आपको इतने ज़्यादा सरप्राइजेस नज़र आते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान as you do in T20Is. I think the format also suits them because they've got the players who can build in innings, and also they've got their own way to get to 300 या उससे ज़्यादा on these surfaces. So home advantage उनका होगा, plus the fact that I think they much prefer the 50 over in terms of less pressure, of making them happen very quickly. अच्छा, हारिस रऊफ की लास्ट मिनट एंट्री हुई है इन द स्क्वाड पहले, मोहम्मद हारिस की, सॉरी, एंड वी weren't एक्सपेक्टिंग दैट पहले, बट उसके बाद उनको इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप मुतमईन हैं? अभी स्क्वाड भी दिखाएंगे सबको. I think it is more of a backup keeper batting option than pure frontline batting, because अगर रिजवान हैं, बाबर हैं, अब्दुल्ला शफीक, शान, इमाम, you've also got फखर in there, तो yes, मोहम्मद हारिस की लेट एंट्री है, but I think it's a good squad पाकिस्तान वनडे फॉर्मेट में, बिकॉज थोड़ा सा टाइम मिलता है और लंबी इनिंग्स खेलना जानते हैं, तो बॉलिंग अटैक फिर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वंस अगेन. वी गॉट अ वेरी सॉलिड बैटिंग लाइनअप एंड ऑफ लेट आप इमाम को भी देख लें, उन्होंने भी रन किए, अब्दुल्ला शफीक ने भी रन किए, बट फॉर मी इट्स नॉट अबाउट द विन, इट्स अबाउट द इंटेंट दैट वी प्ले विद. ये वही T20 वाली बात आ जाती है कि अगर वापस T20 मोड में आप चले जाएं कि डिस्कशन होती है, और बात कहेंगे मेरा फेवरेट टॉपिक है, बट स्ट्राइक रेट इसलिए बात होती है क्योंकि जब सामने वाले दोनों ने 180 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो जब आपका 150 था, दैट इज द डिफरेंस. और वनडे क्रिकेट में भी आखिर में फाइन मार्जिन की ही गेम हो जाती है. सो आई जस्ट फील मैक्सिमाइज आवर अपॉर्चुनिटीज एंड प्ले द बेस्ट टीम्स. जो हमने पहले भी बात की थी, अगर वो, एंड आई फील नाउ विद मिकी वो टू वे कॉन्वर्सेशन ज़्यादा बेहतर होगा कि हम आपको इसलिए नहीं खिला रहे, नो मैटर व्हाट यू डन इन द प्रीवियस मैच, बिकॉज वी फील दिस इज अ बेटर सूटेड साइड अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन ऑन दिस सर्फेस. आई थिंक दोज काइंड ऑफ स्मार्ट डिसीजंस, बिकॉज लाइक ही जस्ट सेड, इट्स ऑल प्रेपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप टू कम, और टाइम नहीं है ज़्यादा, और अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है उसके पीछे अगर लॉजिक है, इट वर्क्स, बट हम ये ज़रूर दिल रखें इस चीज़ का कि वी शुड बी हैप्पी टू ट्राई स्टफ इन केस इट कम्स टू प्लान बी. ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट. बाज़त, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को हल्का नहीं लिया जा सकता, स्पेशली आफ्टर टुडेज परफॉर्मेंस. तो क्या कहेंगे, प्रेडिक्शंस अगर मैं आपसे लूं तो किसका पल्ला ज्यादा भारी है? I think Pakistan will go into the series favorites. New Zealand, yes, they always punch up, मतलब they always make sure that they're up for the fight. लेकिन इतने ज़्यादा players missing from their ODI side, वो ज़्यादा हर्ट करेगी. मेरे ख्याल T20 में I didn't expect them to chase this down, लेकिन they managed to come back. I think there'll be a massive fight, but Pakistan will go in as favorite. एक प्लेयर की मैं ज़रूर बात करूँगा, लोग कहेंगे शायद वो ट्रेंड कर रहा है तो मैं उसकी बात करूँगा, लेकिन इफ्तिखार का T20 का आप निकाल दें, इफ्तिखार का फेवरेट फॉर्मेट है वनडे क्रिकेट, ODIs. His list A record is brilliant. His striking against spin and overall strike rate in list A cricket is very, very good. हमने बहुत जल्दी उसको राइट ऑफ कर दिया है. इसमें तो T20 में तो वो अब वापस आ गया है, लेकिन आई स्टिल फील कि मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली विद हिज बॉलिंग, पाकिस्तान शुड लुक एट हिम अगेन. ठीक है, रोज आपकी प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, आई थिंक प्रेडिक्शन विल बी पाकिस्तान विल विन इट 3-2. But again, for me, you should win. You should. हमारा in the past 6-8 महीने होम पे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. चाहे आप T20 सीरीज की बात कर लें, आप टेस्ट सीरीज की बात कर लें, वनडे सीरीज की बात कर लें, तो विन बट इन अ कमांडिंग फैशन. आप, ये तो नोन फैक्ट है ना कि हम न्यूजीलैंड की फर्स्ट स्ट्रेंथ टीम से नहीं खेल रहे. देयर इज 9 of their front line players missing. So it shouldn't be sort of a neck and neck finish to the finish line. It should be a commanding win, a convincing win, क्योंकि आप अपनी फर्स्ट स्ट्रेंथ टीम खिला रहे हैं. ठीक है, सुन लिया आपने, हमारे एक्सपर्ट्स की बात भी सुन ली कि आप चाहे उनके प्लेयर्स मिसिंग हो, जो भी एक कमांडिंग तरीके से पाकिस्तान को जो है ODI सीरीज को अप्रोच करना चाहिए, इंटेंट दिखानी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर योर थॉट्स बाज एंड अरूज. एंड कुछ दिन का गैप है, कपल ऑफ डेज, एंड आफ्टर दैट we'll be seeing you for the ODI series which starts here in Pindi. I hope you guys enjoyed the coverage, and we'll be seeing you in a couple of days. It's goodbye from all of us.
What a nice pickup shot. Will it go to the fielder? Yes, it will. Babar has handed over to deep square leg. Oh, straight away. Is he going to go? Yes. Tekna has 2 in the over. Goes leg side and nails it. Across the line and all the way. And he'll get to his 25th 50 in T20I. Slightly up-ish, and is it out? Oh, yes, there's a sound there, it's given. Chapman gets to 100. 100 of the highest order. You won't see better T20 hundreds.